अब चर्चा होगी ये चर्चा है बेसिकली स्किन के ऊपर। ठीक है, जो स्किन संबंधित डिसऑर्डर है उसके ऊपर ये चर्चा है। तो माई चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, तो देखो यार, ये है मेलानोमा। ठीक, रेडियल ग्रोथ शोइंग इनरेगुलर नेस्ट एंड सिंगल सेल स्प्राइड मेलानोनिक सेल एंड epidermis and vascular growth. ठीक, showing the nodule and aggregate of the malignant cells extending deeply within dermis and epidermis is on the right, and melanoma cell have a hyperchromatic nuclei and irregular size, shape, and prominent nuclei and mitosis, including the atypical forms such as seen in the center of this field, are often encountered. The lesions are clinically tend to be larger than the navy in the irregular, counter and pigmented, and macula area are the supraorbital radical growth, while elevate area often indicated terminal invasion and vertical growth. अब देखो ये क्या है, ये है डिस्प्लास्टी नेवियस कंपाउंड डिस्प्लास्टिक नेवी फीचर एंड सेंट्रल टर्मिनल component with the asymmetrical shoulder and exclusive junction of the melanocyte left and former correlate with more pigmented rising central zone and lateral with less pigmented flat peripheral papular and feature parallel band of fibrosis encountered in dystrophy and Newport host response. These lesions and numerous irregular navy and back of the individual suggested dysplasia, nerve syndrome, and clinical feature intermediate. Those beginning in the navy and melanoma lesion is usually greater than 5 mm diameter and irregular border and variable pigmented insect. ठीक, तो इसमें यही है। अगला है डिजीज का नाम मेलानोसाइट नेवियस। दिस dermal nevius show the round and melanocyte extended into the dermis with the loss of pigmented and cell beginning in the small and more separate with depth and all receiving sign appropriate and maturation and melanocyte navy and relative symmetrical and uniform pigmented. ठीक, पहले डिजीज का स्किन का नाम है लार्ज सेल कार्सिनोमा, मतलब कैंसर, लीजन मतलब लॉस ए फॉर्म ऑफ मल्टीपल नोड्यूल ऑफ द बेसोलॉइड सेल एंड इन्फिल्ट्रेशन फाइब्रोटिक स्टोमा एंड सेल हैव टेप्लोइड एंड स्मॉल हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई एंड पेरिफेरियल पैलिडिसिड। ठीक, with clefting from the stroma. Note the similarly these cell, basal cell and normal epithelium. This lesion is the prototypically pearly and smooth surface and papular associate telangiectatic vessels. ठीक, और यहाँ देखो ये है malignant epidermal tumor. Incidence of both cell squamous cell carcinoma strongly correlate with increasing lifetime and some exposure. ठीक, अब यहाँ देखो
इसमें क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा most common malignant tumor worldwide. It is the locally aggregate tumor associated with the mutation in the pathway, and metastasis is extremely rare. Cutaneous squamous cell carcinoma can graze an actinic keratosis, but most of arising chemical exposure and thermal burn site associated with HPV infection and scatic immunosuppression. Cutaneous squamous cell carcinoma has potential and metaplasia but is less aggressive than. ठीक, less aggressive than. अब ये डिजीज आप देख सकते हो, डिजीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिजीज यार आपकी कैंसर की डिजीज ये भी है आपकी। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेंसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा इन्वेडेड डर्मिस एज इनरेगुलर प्रोजेक्शन। ठीक, इनरेगुलर प्रोजेक्शन एंड atypically squamous epithelium. This particular case, a catholytic and squamous cell are poorly cohesive and nodule and hyperkeratosis lesion occurring on ear and unfortunately with the metastasis to prominent and lymph node arrow. ठीक, तो अगली डिजीज में ये डिजीज है, यहाँ देखिए एडिनोमा। ठीक, immunohistochemistry revealed the loss nuclear expression of the DNA and mismatch repair of the protein. ठीक, but retention is normal epidermis and lymphocyte. Detecting probable associate with the Neumann-Torr syndrome. This lesion is so lobule proliferation and cebatocytes with increasing peripheral basaloid cell and more mature cibocytes in central portion and vasculated cytoplasm is a feature of the cibocytes insert low region corner. ठीक, अब यहाँ देखें, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में मतलब सीबोरोहिक केराटोस्टेटिस है, मतलब डिसर मतलब लॉस है, कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डरी प्रोलिफरेट एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म बिंगिंग इन द basaloid and keratinocytes with the tendency, ठीक, to form of the keratin and microcyte horn cyst. This is the roughened brown and wax lesion almost appear and stock on skin. ठीक, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये डिजीज आप देख सकते हैं इसमें, ये आपका बोलस पिगफेक्वाइड, मतलब इन बोलस पिम्फिगोइड बोथ IgE एंटीजन and defect directly immunofluorescence in linear and band outlines
डर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिक जोन एंड एपिडर्मिस on left side and fluorescence band and subepidermal vessels has inflammation, infiltrate, rich snow fill and tense fluid filled result in vascular basal layer and producing subepithermal। ये डिजीज दिया गया है, तो ये डिजीज देखो इन्फेक्शन से हुई है, ठीक है। हाँ।